हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस टॉपिक पे मैं पिछले काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ एंड काफ़ी सब्सक्राइबर्स मुझे डिस्कॉर्ड पे बोल चुके हैं इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए। सो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे विच इज़ मैरिटल रेप एंड मैं ये वीडियो ऑब्वियसली मोनेटाइज नहीं करूँगा बिकॉज यूट्यूब अपने आप बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस इज अ सेंसिटिव टॉपिक एंड इसीलिए इस बारे में बात होनी ज़रूरी है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट इज़ मैरिटल रेप, देयर इज़ एन एक्सेप्शन in section 375 of the IPC, जिसमें the exception states that if the man and the woman are married and the woman is not under the age of 15, then the intercourse between them cannot be termed rape. Now कुछ लोग जो कि इस बारे में बात करते हैं वो बोलेंगे कि how can it be rape if it's between a man and his wife? No, it's still rape because the only thing that differentiates rape and consensual relationship is consent, which is important. Whether you're married in a relationship or not doesn't matter. Consent is what differentiates rape from consensual relationships. Now that we have gotten that out of the way, India is one of the last 40 or so countries that has not criminalized marital rape. And why is that? Because मैं अगर आप YouTube करके देखोगे 300 वीडियोस मिल जाएंगे आपको, एवरी हैशटैग फेमिनिस्ट, ओ है इंडिया इतनी बेकार कंट्री है, मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज नहीं है इंडिया में, इंडिया इज सच अ बैड कंट्री। एक के बाद एक आर्टिकल्स मिलेंगे आपको। फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल मैं अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले आई जस्ट गूगल्ड इट एंड इट्स टाइटल्ड द इम्प्यूनिटी ऑफ मैरिटल रेप एंड इट्स रिटन बाय अ पर्सन नेम्ड अनिरुद्ध प्रताप सिंह. And he states how the number of cases that are reported, like every 16 minutes a woman gets raped in India, which is not true. Every 16 minutes a rape case is reported, but that does not mean that a rape case happens, because as we have proven already that many of the cases filed are false and many of the rapes that do happen are not reported. So this whatever this is, the statistics are by no means accurate. एंड इनको बार बार प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए बिकॉज ये फॉल्स नैरेटिव फैलाते हैं, बट दीज पीपल डोंट केयर अबाउट दैट. एंड देन आई फाउंड अनदर आर्टिकल विच इज दिस वन, which has been written by a woman named Nandini Sharma, and she writes, marital rape, can marriage be taken as a license to rape? Obviously not. And then she goes on that India's laws are so patriarchal, rape laws are so patriarchal that a man is provided license to rape a woman if he's married to her. Now, in principle, do I think that should marital rape be criminalized? जी बिल्कुल, 100%. Because obviously, if there is no consent, it's rape. But why is it not criminalized? ये नंदिनी शर्मा जी एंड जो अनिरुद्ध प्रताप जी हैं, इन लोगों ने एक बार ये सोचा कि why is it not criminalized? Because इनके पास हर एक चीज़ का एक ही आंसर होता है. Whenever it's an issue related to women, it's because of the oppressive patriarchy. घंटा नहीं पता इनको oppressive patriarchy के बारे में, इनको ये भी नहीं पता है patriarchy है क्या. इन्होंने कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च नहीं किया है, कोई एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च नहीं की है, जस्ट ट्विटर पे से सामान उठाया है एंड बैंड दिया इंटरनेट पे, बिकॉज दैट्स हाउ मोस्ट फेमिनिस्ट्स ऑपरेट. बट वी हियर have a more thoughtful approach to these topics. Now, like I said, in principle, marital rape should be criminalized. But why is it not criminalized? Why is marital rape not given the same status as a normal rape? Because these people might not talk about it, but sexual violence is criminalized under the Domestic Violence Act, right here. But obviously, it's criminalized, but it's not given the same status as normal rape. And the reason for that is because people understand how these laws are misused. And marital rape is a very, very, very difficult crime to prove that did it happen or did it not happen? Was there consent or not? Because what husband would take a written consent every time from his wife? Is that what you are supposed to do? Take a written consent? Because we won't be able to prove that she gave us consent, right? All she has to do is say that there was no consent. But हमारे पास क्या proof होगा? Should we record every time I have intercourse with my wife? Should I have her on video saying that she's providing me consent every time we have sex? Or should I have her write it down every time that we have sex? Yes, that I have given him permission. What am I supposed to do here? Now that I understand that this is a complex problem, and इसका solution भी complex ही होगा, easy नहीं होने वाला है. इन बेवकूफ़ लोगों की तरह जिन लोगों ने 4 अक्षर ट्विटर पे पढ़े हैं और आके ब्लू कर दिया patriarchal society. That's not how it works. This is a complex social problem. Just oppressive patriarchy को blame करके तुम लोग इसका solution नहीं निकाल सकते हो. Let's say we criminalize marital rape. We have already proven on this channel multiple times, let alone rape and sexual harassment cases. Most of the cruelty by husband or his family, which is the 498A, the dowry harassment law, most of the cases filed under that law are false.
नाउ दिस आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ द ब्लू, मैं कोई ओपनली नहीं बोल रहा हूँ या सरेआम या अपने आप उठा के नहीं बोल रहा हूँ. यू कैन आस्क एनी लॉ ऑफिशियल, यू कैन आस्क एनी जज. लाइक देयर हैव बीन स्टेटमेंट्स गिवन बाय जजेस दैट सेज दैट dowry laws are being misused. NCW has stated that many of these cases that are filed under 498A are false. There are multiple reports about it. You ask any policeman, you ask any lawyer, you ask any judiciary official, they will say that most of these cases are filed because of some kind of a fight. Now imagine, right now the cases being filed are 498A, dowry harassment, domestic violence, and maybe section 377, and then dowry harassment related IPC 125, which is the maintenance law. Imagine if we add another law, which is marital rape, and it's given the same status as a real rape. Imagine the situation in this country, जहाँ पे डाउरी हरेसमेंट लॉज को यूज़ करके सारी दुनिया भर की औरतें उसका मिस यूज़ करके जो है अपने इन लॉज की फैमिली उसको बर्बाद कर रही हैं. एंड इमेजिन इफ शी कैन फाइल अ रेप केस ऑन हर हस्बैंड एज वेल. What will be the situation? How will you prove that he didn't do it? Even if he does prove, once a man is titled rapist and is accused of rape, he can never go back. And these dumb people will never think about it because these are hashtag feminists, right? Because they don't focus on real issues. They don't want to talk about the problem. They are going to mention the problem, but they're not going to go into details. ये लोग बात नहीं करेंगे कैसे प्रॉब्लम इमर्ज हुई है, कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, क्या क्या. ना 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 ना. Every problem exists because of the oppressive patriarchy. Every problem. Now हम जैसे लोग जो जिन्हें पता है रियल सिचुएशन क्या है and what's the situation of men in our country and how easy it is to accuse a man of dowry harassment and domestic violence and what not. Imagine if every husband has the sword hanging over his head of marital rape. I mean, feminists have done already. बहुत कुछ कर चुके हैं feminists जो हमारा जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ मैरिज है उसको बर्बाद करने के लिए, विच इज़ मेकिंग एवरीबडी मिजरेबल, नॉट जस्ट मैन, इट्स मेकिंग वुमेन मिजरेबल. लाइक द कंट्रीज विच हैव lower number of successful marriages is not a successful country. That country is on a decline and this is happening everywhere we see it. Traditional gender roles help, but यहाँ पर उस बारे में बात हो ही नहीं रही है. यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है? Marital rape is not criminalized because the rape laws in our country are patriarchal. Now एक तो patriarchal वर्ड का यहाँ पे यूज गलत है, बट दैट वो भी मैटर नहीं कर रहा है. पेट्रियार्कल सोसाइटी का रेप लॉज से कोई कनेक्शन नहीं है. वी हैव वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेप लॉज ऑफ द वर्ल्ड. हमारे कंट्री में रेपिस्ट को दुनिया की सबसे बुरी नज़र से देखा जाता है एंड ही इज़ पनिश्ड अकॉर्डिंगली, बट ओनली व्हेन ही इज़ पुअर. बिकॉज जब रियल केसेस सामने आते हैं तो ये फेमिनिस्ट्स भी गायब हो जाते हैं, कोई नहीं दिखता इनमें से, बिकॉज इट्स पॉलिटिकल एफिलिएशन हो जाता है. एंड मैरिटल रेप का इशू इतना सेंसिटिव है दैट मोस्ट मैन डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. And who want to talk about it, like this man over here, random वही every 16 minute a case a woman is raped. अरे every 16 minute a case is reported. The number of cases reported and the number of cases tried में ही इतने जमीन आसमान का अंतर है कि उसके बाद acquittal rate पे जाओगे तो होश ही उड़ जाएगा तुम्हारा. Marital rape is not a problem that can be solved easily. This is a serious problem and it should be taken seriously and should not be dismissed कि यार ये तो होता ही नहीं है, and it should be dismissed the other way कि it's just because of the oppressive patriarchy. नहीं, ये दोनों ही आंसर्स रॉन्ग है. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिसका एक सिंपल सोल्यूशन कभी नहीं निकल के आने वाला. बट द रीजन इट हैज़ नॉट बीन क्रिमिनलाइज्ड येट इज बिकॉज हाउ ईजिली इट कैन बी मिसयूज्ड. नाउ इस वजह से जो रियल मैरिटल रेप के विक्टिम्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. बट दिस जो रियल विक्टिम्स डोमेस्टिक वायलेंस के, जो रियल विक्टिम्स 498A के हैं, डाउरी हरेसमेंट के हैं, उनको भी तो नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फेक केसेस. पुलिस वालों के पास जब भी कोई 498A या डोमेस्टिक वायलेंस का केस जाता है उसको सीरियसली नहीं लेते बिकॉज 99% ऑफ द टाइम्स दोस केसेस आर फेक. लाइक लॉयर्स जो है टेम्पलेट बना के रखते हैं. आप किसी लॉयर के पास कभी जाके उनको बोलेंगे एक लड़की को ले जाके कि डाउरी हरेसमेंट का केस करना है, वो टेम्पलेट निकालेंगे जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ कि लड़की के साथ क्या क्या अत्याचार हुए. उसमें सिर्फ नाम और एड्रेस भरने होते हैं. आई हैव सीन दैट. उसकी प्रूफ भी मैं आपको आगे इस चैनल पर दिखाऊंगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. So this is the reason that marital rape is a complex issue and जिसके बारे में कभी कोई खुल के बात नहीं करता. Obviously these dumb idiots जो अपने आप को feminist बुलाते हैं and YouTube पे भरा पड़ा है. If you search marital rape, हर बड़े YouTube चैनल इस बारे में एक वीडियो बना रखी है and nobody goes into the detail about why it's not criminalized. It's just not criminalized because India is a pathetic country and we live in a patriarchal society and यहाँ पे कोई nobody cares for women. That's not true. Well, there are problems, obviously.
हर कंट्री में है, बट हमारी कंट्री में थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं एंड आई अंडरस्टैंड दैट। बट बिना पूरे सिनेरियो कंसीडर किए, बिना ये कंसीडर किए कि अगर हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जो इतने ज़्यादा 498A एंड डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी हरेसमेंट के जो केसेस झूठे चल रहे हैं, इफ़ वी ऐड मैरिटल रेप टू दैट तो क्या सिचुएशन होगी। माई प्रिडिक्शन, मैन विल स्टॉप मैरिंग एट ऑल। लाइक शादियाँ ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे करके विद इन द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स। आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। If marital rape gets criminalized in our country without the proper structure, like just openly, like in 375, that exam, I will never marry anyone. That's for sure. Not because I'm going to commit marital rape on anyone, but because मैं कभी prove नहीं कर पाऊंगा that I had consent. Never. That will be all. Because ये videos had been a little bit difficult because it's a sensitive topic and I only wanted to talk about it जब मेरे पास proper knowledge हो and उसको formulate कर पाऊँ अपने दिमाग में. So I hope that I did this topic justice. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, so give it a like, share it with your friends. If you want to join us, you can join us on Discord server or on Instagram or Twitter. That will be all. नमस्कार.